So hey everyone, welcome back in the new video, and this video is just about the problems which I face in my bike. So this is Apache RTR 160. So if you haven't seen my Apache RTR 160 review video, just go and watch on my YouTube channel, and I'll give a I button link over here or somewhere, I don't know. So yeah, go and watch that video first. And this is just a problem which I face in my bike. So the first point is the major problem which I face in my bike is the vibration issue. So everyone know that the Apache has the problem which is the vibration. So the TVS can't resolve the problem of the vibration of this bike. Even the 180 has this kind of problems. You can feel on the handlebar as well as on the footrest, and even the pillion footrest are vibrate a lot. So the whole chassis vibrate a lot. So that's a really major problem in this bike, and TVS need to be resolve this problem. Yeah, the TVS resolve this bike problem on the RTR 200 which is there over here. So 160 and 180 has a lot of problems over. So yeah, the bike has a transmission problem which is the second problem in my opinion. So the transmission problem is that जब भी मैं gear transmit करता हूँ first से second में, then the bike lose second gear and it will be on neutral. So that's the biggest con in the transmission system. And कई बार तो सेकंड गियर में ट्रांसमिट ही नहीं होता, जब मैं शिफ्ट करता हूँ सेकंड गियर पड़ता ही नहीं है. सो दैट्स अ बिग प्रॉब्लम. एंड जब भी बाइक की सर्विस हो जाती है तब इसको कोई प्रॉब्लम नहीं आती, पर जब इसको सर्विस रिक्वायर होती है तब ये प्रॉब्लम बहुत होता है. सो द थर्ड पॉइंट इज स्टेबिलिटी ऑन हाई स्पीड. सो जब भी मैं हाई स्पीड अचीव करता हूँ लाइक 90, मोर देन 90, like around 100 to 105, 110, then bike look like unstable. I mean not that kind of unstable like you can control it or something. पूरी हिलने लगती है, और सभी को पता ही है कि इसके व्हील सबसे पतले है इस सेगमेंट में. So it has 110 mm rear and 90 mm front. So ये प्रॉब्लम नहीं है, पर जब भी आप कॉर्नरिंग करते हो, मैं स्पेशली कॉर्नरिंग उतना नहीं करता, पर जब भी मैंने किया है कॉर्नरिंग तब मुझे ऐसा फील होता है कि व्हील्स इसके ज़्यादा पतले. लाइक आपको ऐसा फील होता है कि जब वेट रोड होते हैं ना, तब आपको ऐसा फील होगा कि ये स्किड कर जाएगी. बट अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, पर फिर भी अगर TVS प्रोवाइड करते हैं ब्रॉडर टायर, ब्रॉडर व्हील्स, सो दैट is good for the TVS future, because all the CB Hornet and FZ has a wider wheel than this. So that's a con for TVS. Yeah. And सबसे बुरी चीज़ ये है कि ये अपाचे कब से चल रही है, 2011-10 से चल रही है, फिर भी वही साइज के व्हील ये डालते हैं. सो द फिफ्थ कॉन इज द व्हील अलाइनमेंट विच आई फेस, स्पेशली फ्रंट व्हील. ऑब्वियसली क्या होता है कि जब भी सर्विस हो जाती है उसके 2-3 महीने बाद मैं जब भी 70 के ऊपर जाता हूँ तब मुझे ऐसा लगता है कि हैंडल बार हिल रहा है थोड़ा थोड़ा. सो दैट्स रियली problem for me, and I don't know कि every guys face this on their Apache RTR series or not, but I face, so that's a problem for me. मेरा एक्सीडेंट कुछ हुआ नहीं है, बाइक गिरी नहीं है, फिर भी इसका अलाइनमेंट हिल जाता है. So the fifth problem is the build quality. I don't like the build quality. Somewhere the parts are really good, but in somehow the fibers is not that great. आपको दिखता होगा कि ये पूरा हिलता है, और ये ऐसा लगता है कि अभी कुछ कोलिजन होगा तो ये गिर जाएगा टूट के. And the front mudguard is not that strong, so the fiber quality is not that good, but the metal quality is really great. So let's move on the sixth one. So the sixth problem which I face in the bike is the headlight quality. The problem is these headlamps which is not that पावरफुल, ऑल्दो ये ऑल एरिया कवर नहीं करती, दूर तक जाती है पर एरिया कवर नहीं करती. सो दैट्स व्हाई आई यूज दिस LED which I installed 2-3 days before. और ये 4 LEDs है, 2 इधर 2 उधर. So it can cover all the area. So the seventh problem is, if you compare with FZ and Gixxer, the suspension are a little bit of stiffer side. Front fork is great, but the rear suspension is kind of stiff side. Yeah, there is a setting for
for smoothness, but I didn't do that. But the FC has a smoother suspension, especially the rear one. So if you are a rider or if you go on a long ride, it may cause you a back pain or something. So yeah, that's not a big problem, but for someone it can be. Yeah, what a beautiful place, dude. And this is गुजराती में डांगर बोलते हैं इसको, डांगर डोंगर whatever. And the eighth problem is the instrument cluster. Although the instrument cluster is very good, the RPM meter over here, the time, speed, then odometer, everything goes over here. A fuel gauge, but I don't like the fuel gauge because जब भी मैं पेट्रोल डलवाता हूँ तब ये इंडिकेशन बढ़ जाता है. आई मीन तब परफेक्टली काम करता है, पर जब भी मैं बाइक को बंद करके फिर से ऑन करता हूँ तब ये प्रॉब्लम होती है कि ये बस एक या दो ही पॉइंट दिखाता है जब पहले 4-5 पॉइंट दिखाता था. तो so that's a really problem with the fuel gauge. Yep. And the last problem which I face in this bike is this visor, and this visor is on a lower angle and my height is 6 feet 1 inch. जो भी एयर आती है वो सीधा मेरे मुंह पे आती है. सो दैट इज़ रियली अनोइंग. जब आपकी हाइट कम हो 5 feet 7 8 or something, then this won't be a problem for you, but for me, for the tall rider, this is kind of problem. And I'm thinking to add the wind visor over here. I don't know it will look great or not, but yeah, सभी लुक के लिए तो होता नहीं है. So that's all the problems which I face in my bike. So if you like this video, hit the thumbs up, and if you haven't subscribed, please subscribe to my YouTube channel, and see you in the next video.